સ્ટુડન્ટ્સ વેલકમ ટુ માય વિડીયો। આજે આપણે અહીં જોઈશું સ્ટાન્ડર્ડ ફર્સ્ટ સબ્જેક્ટ ગુજરાતી લેસન નંબર 4 ચણા વટાણા જલેબી। અહીં તમને એક ગીત આપેલું છે, તો આપણે એ ગીત એક વખત વાંચીશું। હું તો નિશાળે જાતો તો, હું તો નિશાળે જાતો તો, રોજ નાસ્તો ખાતો તો, સોમવારે તો સેવ બનાવે, મમરા મંગળવારે લાવે, પીવડાવે દૂધ બુધવારે, ગોળ પાપડી ગુરુવારે, ચણા વટાણા લાવતા શુક્રવારે ભાવતા, વહેલો વહેલો ઉઠી સવારે તૈયાર થાતો નાસ્તો, રવિવારની રજા પડે રમવાની બહુ મજા પડે। આ જે ગીત છે લખ્યું છે જયંત શુક્લે। તો અહીં આ ગીતમાં હું તો નિશાળે जातो तो मतलब कि मैं स्कूल जाता था, હું તો નિશાળે जातो तो मैं स्कूल जाता था, रोज नाश्तो खातो थो रोज नाश्ता खाता था, सोमवारे तो सेव बनावे सोमवार को सेव बनाते थे, ममरा मंगलवारे लावे और मंगलवार को ममरा लाते थे, पीवड़ावे दूध बुधवारे बुधवार को दूध पिलाते थे, गोड़ पापड़ी गुरुवारे और गुड़ की पापड़ी गुरुवार को, चना वटाणा लाता था चना और मटर शुक्र लाते थे, भावता शुक्रवारे भावता वो शुक्रवार को चना और बटाणा मतलब मटर खाते थे, वहलो वहलो उठी सवारे तैयार था तो शनिवारे सुबह जल्दी जल्दी उठकर शनिवार को तैयार हो जाता था, रविवार की रजा पड़े रमवानी बहु मज़ा पड़े और रविवार की रजा होती थी और खेलने की बहुत मज़ा आती थी। आज गीत लख्યું છે એ જયંત શુક્લે લખ્યું છે। પછી અહીં એક વાર્તા આપેલી છે, આપણે એ વાર્તા વાંચીશું અને સમજીશું। લીલું અને પીલું। લીલું એટલે કે આ અને પીલું એટલે કે આ। લીલું मतलब हरा और पीलू मतलब पीला। एक का नाम लीलू है और दूसरे का नाम पीलू है। बे बच्चा, एकનું नाम लीलू बीजाનું नाम पीलू। दो बच्चे थे, उनमें से एक का नाम था हरा और दूसरे का नाम था पीला। लीलू लीली वस्तु खातु हतु, जो हरा था वो हरी वस्तुएं ही खाता था। पीलू पीली वस्तु खातु थू और जो पीला होता है वो पीली चीज़ें खाता है, पीली वस्तुएं खाता है। एक दिवस लीलुए एक छोड़ पर कांईक लीलू लीलू जोयू। एक दिन की बात है, जो हरा होता है उसने एक छोटे से झाड़ पर पौधे पर एक कुछ हरा हरा देखा, छोटे से पौधे पर कुछ हरा हरा देखा। लीलुए तेने खाई लीधु। अरे आ तो मरचू हतु। जो हरा है वो उस हरी हरी वस्तु को खा लेता है। अरे ये तो मिर्चा है। फिर वो कहता है कि अरे ये तो मिर्च है। लीलू ने जीभ पर बड़तरा थवा लग गया। जो हरा होता है उसकी जो जीभ है वो जलने लगती है। उसने बहुत तीखी मिर्ची खा लेता है तो उसकी जीभ जो है वो जलने लगती है, उसे बहुत तीखा लगता है। ते रड़वा लाग्यो। तेनी मम्मी दौड़ती दौड़ती आई। अब वो रोने लगता है, तब उसकी मम्मी दौड़ते हुए आती है। पीलू पण भाग्यो। जो पीला होता है वो भी भागता है। ते पीला रंगनो गोड़नो टुकड़ो लई आव्यो। अब जो पीला होता है वो पीले रंग का गुड़ का टुकड़ा लेकर आता है। जो गुड़ होता है वो मीठा होता है, तो अगर हरा गुड़ खाएगा तो उसे थोड़ी राहत मिलेगी। लीलुए झड़पती गोड़ खा दो। अब जो हरा है उसने तुरंत ही गुड़ खा लिया। तेनाथी मोमा बड़तरा बंद थई गया। अब जो है उसके मुंह में जो जलन हो रही थी वो बंद हो गई। गुड़ खाने से गुड़ मीठा होता है तो उसकी जो जलन थी वो शांत हो गई। मम्मी लीलू और पीलू ने पोतानी गोद में ले लीधा। फिर उनकी मम्मी ने उन दोनों को अपने गोद में ले लिया। पछी आगळ आप्युं छे जोड़कणुं। અહીં આપ્યું છે વારના નામ આપ્યા છે રવિવાર, સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર અને શનિવાર। રવિ પછી તો સોમ છે, ત્રીજો મંગળવાર, ચોથો બુધ, ગુરુ, પાંચમો છઠ્ઠો શુક્રવાર,
શનિવાર તે 7મો છેલ્લો વાર ગણાય, આમ એક અઠવાડિયું 7 વારનું થાય. આ જે ગીત છે એ લખ્યું છે દલપત રામે. તો રવિ પછી તો સોમ છે. रविवार के बाद में सोमवार आता है. तीजो मंगलवार. और जो तीसरा वार आता है वो आता है मंगलवार. चौथा बुध, गुरु पाँचवा. चौथा वार आता है वो बुधवार. और गुरु है जो गुरुवार है वो जो 5वां वार है. छठो शुक्रवार. और जो छठे दिन आता है वो शुक्रवार है. शनिवार ते 7मो. और जो 7वां वार आता है वो है शनिवार. छेल्लो वार गणाय, वो अंतिम वार गिना जाता है, अंतिम दिन गिना जाता है. आम एक अठवाडिયું 7 वारનું થાય. इस तरह से पूरा एक सप्ताह 7 दिनों का होता है. પછી અહીં એક ગમ્મત આપેલી છે. શિક્ષકે છોકરાને ઘાસ ખાતી ગાયનું ચિત્ર દોરવા કહ્યું. मतलब कि टीचर ने बच्चों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए कहा. બધા છોકરા चित्र દોરવા લાગી પડ્યા. सब बच्चे चित्र बनाने लगे. चिंटू कागज लेने चित्र बतावा आयु. अब चिंटू नाम का बच्चा कागज लेकर चित्र बताने के लिए आता है. शिक्षक उसे कहते हैं आज शू दोर्यू. शिक्षक ने कहा ये क्या बनाया है. चिंटू कहता है चिंटू घास खाती गाय. फिर चिंटू कहता है कि घास खाती हुई गाय का चित्र. शिक्षक घास क्या. शिक्षक कहते हैं कि घास कहाँ है. चिंटू कहता है कि चिंटू गाय खाई गई. चिंटू कहता है कि गाय घास को खा गई. शिक्षक तो गाय क्या छे. फिर शिक्षक कहते हैं कि तो फिर गाय कहाँ है. चिंटू कहता है चिंटू गाय तो घास खाईने जती रही. चिंटू फिर बोलता है कि गाय घास खाकर चली गई. इस तरह से जो बच्चा है वो मजाक करता है. પછી અહીં તમને અભિનય કરવાનું છે. જે પહેલો ચિત્ર છે એમાં છોકરો આઈસ્ક્રીમ ખાઈ રહ્યો છે. પછી જે બીજો ચિત્ર છે એમાં એક છોકરી શેરડી ખાઈ રહી છે. ત્રીજા ચિત્રમાં એક છોકરો ભુટ્ટો ખાઈ રહ્યો છે. અને ચોથા ચિત્રમાં એક છોકરી લાડવું ખાઈ રહી છે. તો આવી રીતે તમને ખાવાની વસ્તુઓનો અભિનય કરવાનો છે. પછી આગળ આપ્યું છે સાંભળો. નીચેનો ફકરો 2 વાર મોટેથી વાંચો. અહીં જે ફકરો આપ્યો છે આપણે એ વાંચીશું અને સમજીશું. પેટુરામને સોમવારે સમોસા. અહીં જે આદમી આપેલો છે એનું નામ છે પેટુરામ. તો પેટુરામ को सोमवार को समोसा चाहिए. मंगलवारे मोहनथाल. और मंगलवार को उसको मोहनथाल चाहिए. पेटूराम सोमवार को समोसा खाता है और मंगलवार को मोहनथाल खाता है. बुधवारे बूंदी, गुरुवारे गुलाब जामुन. बुधवार को उसको बूंदी चाहिए, बूंदी के लड्डू. और गुरुवार को उसको गुलाब जामुन चाहिए. बुधवार को वो बूंदी के लड्डू खाता है और गुरुवार को गुलाब जामुन खाता है. शुक्रवारे सीरो, शनिवारे शक्करिया અને રવિવારે રોટલી આપી. शुक्रवार को वो हलवा खाता है और शनिवार को वो शक्करिया खाता है और रविवार को वो रोटी खाता है. હવે પેટુરામના પેટમાં જોઈને કહો તેણે શું નથી ખાધું. એ ક્યાં વારે ખાવાનું હતું. પછી આગળ આપ્યું છે ચર્ચા. રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિ. આ ચિત્રના આધારે અહીં નીચે પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે દોરડી કોણ કૂદે છે. તો દોરડી આપણે ઉપર ચિત્રમાં જોઈએ તો દોરડી સોમ કૂદે છે. બીજું ફૂલ રેકેટ કોણ રમે છે. તો આપણે ઉપર ચિત્રમાં જોઈએ તો ફૂલ રેકેટ ગુરુ રમે છે. ત્રીજું પતંગ કોણ ચડાવે છે. તો પતંગ ચિત્રમાં જોઈએ તો પતંગ શુક્ર ચડાવે છે. શનિવાર શું કરે છે. તો શનિવાર ગિલ્લી દંડો રમે છે. ફૂટબોલની રમત કોણ રમે છે. તો આપણે ઉપર ચિત્રમાં જોઈએ તો બુધ ફૂટબોલની રમત રમે છે. કયા ચિત્રમાં તીર ચલવાય છે. તો આપણે ઉપર જોઈએ તો રવિ એટલે કે પહેલા ચિત્રમાં તીર ચલવાય છે.
કયા ચિત્રમાં ક્રિકેટ રમવાની તૈયારી છે? તો આપણે ઉપર જોઈએ તો મંગળ, એટલે કે ત્રીજા ચિત્રમાં ક્રિકેટ રમવાની તૈયારી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જ આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.